Hi everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about one of the most fascinating scientific breakthroughs of our time. It is plants plastic eating bacteria. Now you already have heard of decomposing bacteria, and bacteria do decompose the dead and decaying organisms and all of that thing, right? But have you ever heard of plastic eating bacteria? Like, do you even know that bacteria has the capability to eat plastic, which is a major breakthrough. So that is that. So we will study about plastic eating bacteria today. But before proceeding towards the video, I just want to request to please like, comment, share, and subscribe to my channel. And if you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comments section. Okay. So, I would say that imagine microorganisms that can literally eat plastic and they help in cleaning our planet, okay, in return. So, it sounds like fiction, it sounds imaginary, right? But it is real science. So, let's uncover how nature is providing us a potential solution to one of the world's biggest environmental issues or threat, I would say. Okay, so firstly I would like to introduce you all to the plastic problem. Like, what is the issue, what are we solving here with the with the adoption of plastic eating bacteria, or with the research of plastic eating bacteria, I would say. So, generally, if I would have to give you a quantitative figure, I would say like every year humans produce about 400 million tons of plastic each year, annually, on an annual basis. This amount of plastic is produced every year, and shockingly, less than 10% of this amount of plastic is recycled everywhere. Now understand, you know we are producing plastic at this large scale, and we are recycling just 10% of it, or below, it is less than 10%, it is 9%. So now understand, the remaining plastic which is not getting recycled, where it is going, you know who is using that plastic. So that is the problem. The rest of the plastic which is not getting recycled is either piling up somewhere in the landfills, or it it ends up in the oceans for centuries. Okay, so plastic does not degrade for hundred of years. That we all know, that plastic do not have the capability to degrade. It does not go under the process of degradation by itself. Okay, so it turns our planet into a long-term dumping ground, because every year lots and lots of plastics gets manufactured or gets created in the environment, and on an annual basis, and then we are not even recycling it, so we are harming our own environment. Okay, but there is a recent breakthrough, and major breakthrough, I would say. Scientists have recently discovered that tiny microbial heroes, I would say, that might help solve this massive issue or threat. Okay, so why is plastic pollution a global crisis? What is happening with plastic pollution, and why it is a major crisis? So see, plastic pollution is not just an eyesore, it's an ecological and health disaster. Now, how it is an ecological and health disaster, you all understand it is an ecological disaster, but how is it is a health concern? So see, plastics are durable, they are lightweight, they are cheap, but that doesn't mean, but that plastics are light, plastics are durable, plastics are lightweight, they are cheap, but that also means they don't easily break down. With all of these advantages that comes up with the use of plastics, there come a this major disadvantage, that it do not have the property of degradation. It does not degrade itself. So they choke marine animals, enter our food chain as microplastics,
and even disrupts hormone level in mutants. Okay, so all of these things, all of these factors makes it one of the most pressing global environmental issues today we are dealing with. Okay, because marine life कहीं ना कहीं impact हो रही है, human life कहीं ना कहीं impact हो रही है, food chain impact हो रही है, because microplastics इतनी ज़्यादा हो गई है and it is dumped everywhere in the environment. So उस वजह से marine life, because oceans में बहुत ज़्यादा dumping होती है, human health, फूड चेन्स, सब कहीं ना कहीं प्लास्टिक की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है. ओके, नाउ what are the type of common plastics? To understand how bacteria break down plastic, we need to know what types of common plastics are there in the environment. Okay, so see, there are 5 types. First is PET. PET को हम बॉटल्स में पैकेजिंग के लिए, जब पैकेज करते हैं प्लास्टिक से, तो पैकेजिंग के लिए और बॉटल्स में यूज़ करते हैं. ओके, PET को हम बैग्स में यूज़ करते हैं जनरली, या कंटेनर्स में यूज़ करते हैं. देन देयर इज PP. PP इज यूज्ड इन कैप्स, स्ट्रॉज. कैप्स इज ढक्कन जो होते हैं बॉटल के. PS को हम, PS इज पॉलीस्टाइरीन, हम फोम पैकेजिंग में यूज करते हैं, फोम को पैकेज करने के लिए. एंड PVC एज यू ऑल नो पाइप्स में यूज होता है, केबल्स में, लेदर में यूज होता है. सो ऑल ऑफ दीज types of plastics are non-degradable under natural conditions. They cannot, they are resistant to natural degradation. Now what are plastic eating bacteria? So see, plastic eating bacteria are nothing but they are microorganisms. ठीक है, वो microorganisms हैं जिनके अंदर capability है प्लास्टिक को डिग्रेड करने की simpler harmless compounds में. अगर वो simpler harmless compounds में बदल जाते हैं, then we can process that plastic easily. So microorganism कहीं ना कहीं इसमें बहुत major role play कर रहे हैं. अब microorganisms ही करते कैसे हैं? Microorganisms have enzymes in their bodies जो पॉलीमर चेन्स को ब्रेक डाउन कर सकती है. वो एंजाइम के वजह से बायोडिग्रेडेशन पॉसिबल हो पाता है. ओके, तो एंजाइम्स जो होती हैं वो नेचुरल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती हैं जो कि केमिकल बॉन्ड्स प्लास्टिक के तोड़ सकती है. तो इस तरीके से वो प्रोसेस हो पाता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू डिस्कवरी ऑफ इडियोनेला सेकेनेसिस. 2016 के अंदर व्हाट हैपेंड इज, जापानीज साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक बैक्टीरिया डिस्कवर किया, इडियोनेला सेकेनेसिस, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट में. जो एक प्लांट था विच हैड द प्रॉपर्टी ऑफ रिसाइकलिंग द प्लास्टिक, उसमें ये बैक्टीरिया को देखा गया, डिस्कवर किया गया. ये जो माइक्रोब था ये PET प्लास्टिक को ब्रेक कर सकता था. जो हम बॉटल्स में या फूड कंटेनर्स में यूज करते हैं, दैट इज PET प्लास्टिक, उसको ब्रेक डाउन कर सकता था. अब उसका जब मशीनरी समझा गया तो वो 2 एंजाइम्स को यूज करके ही कर रहा था. वन इज PETase एंड सेकेंड इज MHTase. सो ये प्लास्टिक को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करता है जो कि हम रीयूज कर सकते हैं. वो जो रॉ मटेरियल है, वी कैन रीयूज दैट रॉ मटेरियल्स. इस तरीके से प्लास्टिक भी कम हो रहा है, रिसाइकिल हो रहा है, एक ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है जो कि अगेन रीयूजेबल है, रॉ मटेरियल्स रीयूजेबल है. सो यहाँ पर से स्टार्ट हुई, दिस वाज अ मेजर डिस्कवरी जहाँ पे हमें पता चला कि बैक्टीरियाज हैव द कैपेबिलिटी टू डाइजेस्ट द प्लास्टिक एज वेल. ओके, इट हैपेंड इन 2016. नाउ हाउ PETase वर्क. मैंने आपको बताया एंजाइम PETase और MHTase थी. PETase काम कैसे करती है? तो सी, PETase एंजाइम क्या करती है, इट वर्क्स बाय अटैचिंग टू द प्लास्टिक सरफेस. सबसे पहले PETase जो एंजाइम है वो प्लास्टिक सरफेस पे अटैच होती है, केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करती है जिन्होंने पॉलीमर्स को आपस में पकड़ रखा है. बिकॉज व्हाट इज प्लास्टिक, पॉलीमर्स इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दैट इज प्लास्टिक. तो बैक्टीरिया, वो जो एंजाइम होती है बैक्टीरिया के अंदर, वो उसको पॉलीमर्स का जो बॉन्ड है उसे तोड़ती है. वंस इट हैपन्स, प्लास्टिक जो है स्मॉलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसको आप फर्दर रिप्रोसेस कर सकते हो. ये प्रोसेस देखा जाए तो नेचर में स्लो है, इट डज नॉट हैपन रैपिडली.
लेकिन साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उसके ऊपर कि हाउ इट कैन बी फास्ट इनफ, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू स्केल दिस प्रोसीजर, ताकि और ज़्यादा फास्ट हो सके और ज़्यादा एफिशिएंट हो सके। दूसरे तरीके के प्लास्टिक डिग्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? सो यू नो इडियनेला सेकेनेसिस एक था जो हम जिससे डिस्कवरी चालू हुई। उसके अलावा देयर आर सेवरल अदर माइक्रोब्स एंड फंजाइज जो कि ये काम कर सकते हैं। सूडोमोनास बैक्टीरिया, so Pseudomonas bacteria has the capability to degrade polyurethane। अलग अलग तरीके का बैक्टीरिया अलग अलग तरीके की प्लास्टिक फॉर्म को डिग्रेड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट एंजाइम इट इज पोजेसिंग। बैसिलस सीरियस जो है वो पॉलीइथाइलिन को ब्रेक कर सकता है। एस्परजिलस ट्यूबिनजेंसिस जो है वो सॉइल का फंगस होता है, एस्परजिलस ट्यूबिनजेंसिस। तो ये फंगस प्लास्टिक्स, सॉइल के अंदर जो प्लास्टिक होती है उसको ब्रेक कर सकता है। रोडोकोकस र्यूबर, रोडोकोकस र्यूबर क्या करता है? इट मेक्स अप दी बायोफिल्म्स, इट मेक्स अप दी बायोफिल्म्स जो कि डिग्रेडेशन को स्पीड अप कर सकती है। ओके, सो इस तरीके से होता है। नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर फास्टर डिग्रेडेशन। So as I told you, ये प्रोसेस काफी स्लो है नेचर में। You know, if you want to scale it up, if you want to do it for the larger purpose, we definitely need to have a faster and improved version of this procedure. Okay, so इसीलिए इंडस्ट्री वायबल इसे बनाने के लिए साइंटिस्ट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेथड यूज किया। बैक्टीरिया को इस तरीके से मॉडिफाई किया, by modifying the bacteria like E. coli कि वो पीईटेज और एमएचईटेज प्रोड्यूस करे। हम ऐसे करके सुपर डिग्रेडर्स बना सकते हैं। सुपर डिग्रेडर्स फास्ट प्लास्टिक को डिग्रेड करेंगे। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से वो एंजाइम को इंट्रोड्यूस करके ई कोलाई के अंदर वी कैन मैन्युफैक्चर और क्रिएट दी सुपर डिग्रेडर्स जो फास्ट परफॉर्मेंस दें। तो उस तरीके से साइंटिस्ट ने ये किया। There is also research into making these enzymes stable at higher temperatures because generally enzymes higher temperatures पे नहीं suitable रहती हैं। तो there are several clinical researches going on जिसमें ये ट्राई किया जा रहा है कि उसकी improve performance को किस तरीके से better कर सकते हैं। Okay, now moving forward to microbial consortia and biofilms. See, researchers जो हैं they are experiencing researchers जो हैं they are experimenting with microbial consortia. Microbial consortia is nothing but the community of multiple microbes working together. जब बहुत सारे microbes एक साथ काम करते हैं तो हम उसे microbial consortia बोलते हैं, microbial community basically. सो रिसर्चर्स उस पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ये कॉन्सोर्शिया, अगर हम पूरा कॉन्सोर्शिया उसको काम पे लगाएं तो वो प्लास्टिक की स्पीड से डिग्रेड हो सकती है, एज कम्पेयर टू एनी सिंगल स्पीशीज। बायोफिल्म्स are nothing but these slimy layers of formed by microbes। जो slimy layer microbes की वजह से बनती है, that is biofilm। It increases surface contact with plastics and boosts degradation। तो बायोफिल्म जब बन जाती है, स्लाइमी लेयर बन जाती है, तो प्लास्टिक के साथ जो कांटेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से डिग्रेडेशन फास्ट हो सकता है। तो इस तरीके से दैट इज़ पॉसिबल। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स क्या क्या है। देखो, अगर ये टेक्नोलॉजी परफेक्ट हो जाती है, हम इसको स्केल अप करने में परफेक्ट रहते हैं। So first is it is reducing the plastic piling up here and there। हमारे ओशंस में, हमारे लैंडफिल्स में जो प्लास्टिक जो है पाइल हो जाती है, जो हम इतना ज़्यादा डंप रहता है प्लास्टिक का, वो कहीं ना कहीं कम होगा। इट रिकवर्स द वैल्यूएबल मटेरियल्स फॉर रीयूज। जो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है उसे हम यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एनवायरनमेंट में फ़ायदा कर रहे हैं उस चीज़ का। इट इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग द नीड फॉर केमिकल रिसाइकलिंग, बिकॉज अभी जो हम रिसाइकिल करते हैं केमिकल रिसाइकिल होता है जनरली, तो वो एक्सपेंसिव है, पॉल्यूटिंग है, तो वो उसकी नीड भी कहीं ना कहीं कम होगी। सो इट इज़ सपोर्टिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी जहाँ पर वेस्ट को हम किसी एक तरीके से रिसोर्स बना सकते हैं। ठीक है, what are the current challenges? Of course there are challenges. This technology is not like very old, so we are still in the researching phase.
सी डिग्रेडेशन अभी बहुत ही स्लो है. वी नीड मेथड्स, वी नीड स्ट्रैटेजीज कि किस तरीके से हम उसे स्केल अप कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ऐसे हैं जो स्पेसिफिक प्लास्टिक्स को ही टारगेट करते हैं. पीईटी हुआ, पी हुआ, तो वो स्पेसिफिक प्लास्टिक को ही टारगेट करते हैं. वी नीड इस तरीके से बैक्टीरिया के एक बैक्टीरिया का मल्टीपल एरिया ऊपर वो टारगेट कर सके. और स्केलिंग अप इज़ डेफिनेटली अभी एक बहुत मेजर टास्क है. अगर हमें अभी स्केल अप करना हो तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली. सो वी नीड बैलेंस देयर एज वेल. So we also need to ensure that genetically modified bacteria don't harm our ecosystems if modified or if released accidentally. अगर हम एक्सीडेंटली उसको रिलीज कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को किसी भी तरीके से हार्म नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोविड टाइम पे हुआ था. Now what are the solutions and what are the future prospects? So see, इन challenges को overcome करने के लिए साइंटिस्ट ऑलरेडी प्रोटीन इंजीनियरिंग को यूज़ कर रहे हैं. प्रोटीन इंजीनियरिंग की मदद से, बिकॉज प्रोटीन से ही एंजाइम्स बनते हैं. ओके, एंजाइम्स आर नथिंग बट या प्रोटीन. सो लाइक दे आर ट्राइंग, साइंटिस्ट आर ट्राइंग कि प्रोटीन इंजीनियरिंग को यूज़ करके एंजाइम की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके. एआई मॉडल्स, एमएल मशीन लर्निंग को यूज़ करके बेटर एंजाइम्स डिज़ाइन किए जा सकते हैं. एंजाइम कॉकटेल्स बनाया जा सकता है. एंजाइम कॉकटेल्स मतलब होता है कि मल्टीपल प्लास्टिक एक साथ टूट पाए. जो एज ए साइड बैक्टीरिया जो होते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लास्टिक को टारगेट करते हैं. तो एंजाइम कॉकटेल जहाँ पर हम बहुत सारे एंजाइम्स मिला के एक बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया बनाए. तो दैट बैक्टीरिया would be able to target multiple type of plastics. So that is the meaning of enzyme cocktails. And combining biodegradation with chemical recycling for faster results is also recommended. कि किस तरीके से हम बायोडिग्रेडेशन को, नेचुरल डिग्रेडेशन को केमिकल रिसाइकलिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं ताकि स्केल अप फास्ट हो जाए और रिसाइकलिंग फास्ट हो जाए. So I have gone through these case studies as well. If you want the links for these particular case studies, if you want to go through these case studies, like these ones are good ones, I have read it through, to understand how and where we are currently in the research phase. So Carbios, France, में हुई है study, PET-based recycling plant they are trying to generate or create. So this is one case study, and यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ में साइंटिस्ट ने रीडिज़ाइन किया है PETs को हायर एक्टिविटी के लिए. एंड इवन नासा इज ऑल्सो रिसर्चिंग माइक्रोब्स दैट कैन रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट स्पेस मिशंस के लिए. ओके, सो दिस इज शोइंग अस हाउ ग्लोबली इम्पैक्टफुल दिस फील्ड इज बिकमिंग. ओके, नाउ the role of synthetic biology. What is the role of, how can we integrate synthetic biology into this particular technology to make it more efficient or to make it more viable? Okay, so see, synthetic biology takes this technology further and further and further, by using CRISPR to insert plastic degrading genes into different microbes. That can be one technology which can improve or which can manufacture, create genetically engineered microbes. These can modified microbes which act as biological recycling factories, designed to survive in polluted environments. So इस तरीके से कहीं ना कहीं it can happen. So the dream or the aim is to one day release safe controlled strains that can clean up our environment naturally. This is our aim. So what are the ethical and ecological considerations? See, we definitely need to proceed with this technique, but we need to proceed with caution. Releasing engineering bacterias or engineered bacterias into the wild raises biosafety concerns. So we need strict containment measures and ecological assessments before environmental use. Okay,
And innovation must always be balanced with safety and responsibility to manage and maintain ecological balance. Okay. So what is the future vision? Like imagine, I would just give you an example. Imagine oceans free from plastic, landfills shrinking, and even space waste being released by microbes. Sorry, recycled by microbes. That is the future vision. Okay, so this is not just an aim, it is a future which is powered by science and nature working together. Okay, the main goal is to turn pollution into a biological solution, one microbe at a time. Okay, now to conclude or to wrap up, plastic pollution is one of the biggest and major threats to our planet. It is one of the biggest threat, I would say, to our planet. One of the biggest environmental challenge. But nature as always has hidden solutions which are waiting to be discovered. So plastic eating bacteria are just the beginning of a new era of sustainable science. With research, with collaboration, with innovation, we can truly make our planet greener and cleaner. Okay. So yeah, thank you so much for watching. If you found this topic fascinating, informative, don't forget to like, comment, share and subscribe for more amazing science content. Okay, so before that, before leaving the video on the channel, please do like, comment, share and subscribe to my channel. I'll be back with more such videos. Thank you so much. Bye bye. Take care.